Assalamu alaikum and a very warm afternoon. This will be chasing 155 against the likes of Stick Club Kupwara. Stick Club finished their campaign on 154 for 8 after their enlarged court of 20 years. And Dadoo, their openers out to the centre, outwork Adil Guldan, and is joined by his colleague on the other side. Guldan will take strike on the other side. We'll have to wait and watch who's going to open the attack for Stick Club. And we got Jafar, thank you very much. Welcome back, buddy. It's going to be over number 1. Dadoo require 155 to chase this one down and to enter the next stage. It is a pre-quarter game underway, and fielder bowler is designing, manipulating the field on either side. Thank you, Adil. But chase on, game on. 155 is what Dadoo Rangers require. There is a slip in place, gully, then a backward, a point, straightish point. Here is ball 1. Sheikh Junaid will bowl. First ball up in the air. Man settling. Can he take that? Can he take that? Oh, he dropped. And that goes past him. Couple of bounces into the fence for more. First ball blowing up in the air. And man settling for the ball in the end. Unable to take that. Misjudged in the end. And ball falling within the boundary there after a couple of bounces. Trickle into the fence for more. So Adil Guldan is underway, so is Dadoo Rangers, and chase underway, 4 for none. That was brought to you by Just Bukhara, chasing 155. They're 4 for none in over number 1. Guldan, first ball launched up in the air, sky, but the field there dropped. Should have been taken. The very first ball, Sheikh Junaid can't believe his luck. Bit unlucky to be precise. Well, on the other side, it is Adil Guldan will try to provide him one great start, a dream start. First ball and it's 4. Here is Sheikh Junaid again with a packed topside field, heavily cordoned upside. Next time, here he is, and this time batter trying to chase it. Ball moving outwards, gently outwards, and the batter unable to get right behind the line of the ball there. And we got Dheeraj Wadhwa. Thank you very much, MD Anthem Sports India, thank you very much, buddy. Then we got Tariq Waghe and Burhan Denare, but these are the belongings. It's 4 for none, chasing 155. Guldan is on to 4 of 2. Nasir, he is yet to open his account. He is on the other side. He's yet to face ball 1. Here is Junaid again. And that one dispatched. Stand and deliver. We'll have to wait and watch. Is it 1 bounce 4? Yes, it does. Good start. What a start turnover. First ball, lucky boundary, but the next one, it's in all sorts of control there. Right onto it. Enough of it. For more. 8 for none. And that was brought to you by Just Bukhara. 155 is what Dadoo require. But this is a great start from Adil Guldan. Here he's onto it. Oh, down the leg side. Dispatched. All the way. Swill on its axis. Just directed it. Just given it a direction. 6 more. String down the leg side, wrong line, and punished in style. It's 14 for none into the double figures, and that 6 blasted from Adil Guldan and score propelled to 14 for none, chasing 155. What a start turnover, 14 of it. What a start to chase. Dadoo require 155, and this is called a pulse twin, an aggression, an intent from ball 1. It is Adil Guldan on strike again, 14 for none. Junaid under serious hammer. Pressure on Junaid. Here is Junaid again to Guldan. Oh, nearly dragged on. Nearly dragged that one on. And I was about to throw chopped on, but the ball eluding the stump there. So now I'm done 14 for none. Guldan 14 of 5 balls. On the other side, Nasir is yet to get underway. He's yet to open his account. He's yet to face ball 1. Faisal writes in. Faisal believes that if you use part-timers to start with, and this is going to happen to you. Here he is again, Sheikh Junaid. And down the leg side, almost up to the hips, and he worked away. Not in control, but he will take that. Oh, leg by signal. 1 more run. 15 for none after the completion of over number 1. Dadoo Rangers chasing 155. They're 15 for none.
And majority of runs falling into the kitty of Adil Guldan, 14 of 6 balls. And Nasir Rasool is yet to open his account. He's on to 0 or none of none. And he's yet to face ball 1 after the completion of over number 1. Dadoo Rangers a 15 without loss. Cricket Kapora believes Dadoo will chase it in just 12 overs. Well, only the time will tell us. I think it will be pretty immature to say that they will finish it within the 12 overs. I don't think. But yeah, cricket can play some tricks out there. Thank you, DK Dar, for love and sport. Is watching from Irfa Coaching Institution, Handwara. Thank you very much, sir, for your love. It's 15 without loss. And now it's going to be Abrar Peer to bowl. Thinner bodied, tall, lanky guy will bowl from this end, from road, and he will be operating again as the likes of Nasir Rasool. Now Guldan will take strike, to be precise. He keeps the strike with that leg by of the final ball. And Abrar is warming up, reflexing his arm as there, warming up a bit before he will start the operation with the ball from road end. Chasing 155, they are 15 for none. Here he is for the first time. Abrar goes away from us. That's high up in the air. Man settling. Abrar says it's mine. Oh! He slipped there, and unfortunately he dropped that one. He can't believe. He was throwing out, it's mine, don't disturb me, let me complete the catch. All of a sudden, he slipped there, and look at the roar from the crowd. Cricket is only entertainment in this unbearable heat. Watching you and Ashes. Thank you very much, Muntazir Farooq. You're absolutely right. And now I feel that Muntazir Farooq, we got blood viewers on Digger Sports Time who love the real cricket that is called the Test cricket, and he's catching the wonderful vibes from Lord's. Mecca of cricket is all set for a terrific finish between Aussies. The Brits will feel the heat against Aussies. There, Kangaroos there at Lord's, and we got Stickler feeling the heat of Guldan and Dadoo Rangers out here at Karihama. Here he goes. Oh, that one shaping away, trying to draw it on the rise delivery. Can't get right amount of bat behind the line of the ball. It is a dot ball, 15 for none. But some respite, some salvation for Stickler up there, and their pacer Abrar Peer. Ball 2 deliveries and ball really well. First ball it was high up in the air, but he wasn't able to latch on to the ball on that occasion. But Adil is living dangerously over here. 15 without loss. Thank you, Ems. Here he is again. Goes away from... Oh! Absolute beach of a delivery. Absolute gorgeous, unplayable one. And Zubair Khan, look at that delivery. Excellent ball. What a ball. Cranking up. Scared him up. No answer to that one. It was absolute great ball. Thank you, Adil Khan. Thanks, buddy, for your love. It's 15 for none after halfway stage in over number 2. It's over to Sheikh Nazir. धन्यवाद. और शालबुग क्रिकेट भी हमारे साथ बना हुआ है और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार. इस बार बढ़िया गेंद मिडिल स्टंप पे वहां पर रन लेने का प्रयास किया था आदिल गुलडान ने, लेकिन जैसे ही देखा गेंद सीधे वहां पर खिलाड़ी के हाथ में वापस अपने कदम सुरक्षित करी. इसमें बगैर किसी रन के 1.4 ओवर की गेंदबाजी 155 बना रहे हैं मुकाबले को जीतने के लिए. आदिल गुलडान और नासिर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में. काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे इन परिस्थितियों में, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य को भेदना है. और शुरुआत में कुछ खराब क्षेत्ररक्षण जरूर देखने को मिला. एक कैच छूटा वहां पर, तो निश्चित तौर पर उसकी भरपाई करनी होगी. एक विकेट की आवश्यकता यहां पे शुरुआत में गेंदबाजों को. राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था विकेट कीपर बेचो के. गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए. एक और जस्ट मौका उपहार के रूप में मिलता हुआ 19 पे पहुंचा दिया है कुल योग. 1.5 ओवर की गेंदबाजी. डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम सिटी क्लब के विरुद्ध इस समय बल्लेबाजी कर रही है. न्योता उनके सामने है. 155 बना रहे हैं मुकाबले को जीतने के लिए.
और इन परिस्थिति में किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि योजनाएं काफी संघर्षपूर्ण है और इरादे स्पष्ट है दोनों बल्लेबाजों के, खासकर गुलडान जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं और उसी शैली के वो बल्लेबाज है जिस शैली के विपरीत वो समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर अबरार राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार फिर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की तरफ हल्का सा उछाल वहां पर गेंद में देखने को मिला। बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ओवर पूरा हुआ, 2 ओवर की समाप्ति और ऐसे में 19 रन बने हैं बगैर नुकसान के। आदिल गुलडान 18-12 गेंदों से, और वहीं पे नासिर को अभी अपना खाता खोलना है। और अबरार ने आज पहले प्रारंभिक गेंदबाजी के रूप में वहां पर साथ दिया था गेंदबाज का, और 4 रन उन्हें खर्चे, तो कुल मिलाकर 19 रन बने हैं। और इन परिस्थिति में किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। धन्यवाद राहिल और इशफाक परे भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आदिल खान के साथ रामहाल क्रिकेट लीग कारेहामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस समय यह प्रतियोगिता चलते हुए और अंतिम चरण की और इस समय अग्रसर। फिलहाल पारी का 30 ओवर उस छोर से यानी कि दूर वाले छोर से एक बार फिर संभवतः शेख जुनैद है। राइट आर्म ओवर द विकेट, 2 स्लिप लगा के रखी है ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छा निर्णय बल्लेबाज का, देखा वाला बाहर की तरफ सरकते हुए छोड़ा उसको विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। 2.19 बगैर नुकसान के। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। 155 आपको याद होगा बनाने हैं निर्धारित 20 ओवर में इस मुकाबले को जीतने के लिए डैडू रेंजर्स की टीम को। सिटी क्लब कफारा के बाद अच्छी खासी दर्शकों की संख्या यहां कारेहामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अच्छी खासी धूप खिली हुई और ऐसे में बेहतरीन वातावरण क्रिकेट के अनुकूल। 2 स्लिप के सहारे सब एक स्लिप को हटा लिया गया। इस बार नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज नासिर रसूल, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 19, 2.2 ओवर की गेंदबाजी। शेख जुनैद 14 रन अभी तक खर्चे है, 1.2 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है। यह पारी का 30वां ओवर इसमें वर्तमान स्थिति में चलता हुआ। आदिल खान, माजिद राथर और आदिल के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए अन्य दीगर व्यूवर जो इस समय बने हुए हैं अपना समर्थन सहयोग देते हुए धन्यवाद सभी व्यूवर्स का, और बने रहिए, आनंद लेते रहिए इस मुकाबले का जो कि इस समय 155 का पीछा कर रही है डैडू रेंजर्स कश्मीर की टीम सिटी क्लब कुपवारा के विरुद्ध। 19 बने हैं 2.2 के बाद। ये पारी का 3रा ओवर। शेख जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद नासिर रसूल के लिए, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, अंतिम समय में बल्ले को नीचे लाते हुए ऑफ साइड में धकेला। 1 रन और तेज दौड़ के साथ गुलडान को मिल गई स्ट्राइक। 1 रन और खाते में 20, 2.4 ओवर की गेंदबाजी और सफलता अभी नहीं मिली है क्योंकि शुरुआत में एक अवसर जरूर बना था लेकिन उसको वहां पर लपकने में असफल रही टीम, जहां तक सिटी क्लब कफारा की टीम का सवाल है। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। शेख जुनैद सामने है गुलडान, 20 रन कुल योग ये गेंद, और गुलडान ने बल्ला चलाया, बाहरी किनारा, हवा में है गेंद, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं और एक और कैच वहां पर छूटा। हालांकि प्रयास किया गेंद को रोकने में, सफलता प्राप्त जरूर की लेकिन 2 रन और समझते वहां पर अंपायर का निर्देश 4 रनों का आता हुआ, और 4 रन यहां पर जस्ट मुखारा चौका मिलता हुआ। एक और अवसर बना था, प्रयास किया था वहां पर खिलाड़ियों ने लेकिन नहीं पहुंच पाए, और इस प्रकार का जो क्षेत्र रक्षण है काफी घातक हो सकता है आने वाले समय में। खासकर गुलडान का विकेट काफी महत्वपूर्ण है इसमें सिटी क्लब के गेंदबाजों के लिए, और 23 रन इस समय बन चुके हैं। 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, सफलता अभी मिली नहीं है, जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ अवसर जरूर बने हैं लेकिन उसको लपकने में अभी तक का सफलतापूर्वक प्रयास नहीं हुआ है। एक स्लिप यहां पे लगा के रखी है सिटी क्लब ने गुलडान के लिए। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, फिर बड़ा प्रयास करने की कोशिश लेकिन लगातार वहां पर स्ट्रोक ले रहे हैं गुलडान, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पा रहा है। कभी गेंद नीचे रहती हुई, कभी अतिरिक्त उछाल, और निश्चित तौर पे विकेट का जो स्वभाव है वो समझना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और शुरुआत में गेंदबाजों को सटीक लाइन और लेंथ के साथ क्षेत्र रक्षण कमाल का करना होगा। शुरुआत में विकेट चटकने होंगे, तब जाकर के आप कुछ मनमानी दबाव की स्थिति बल्लेबाजों पर छोड़ सकते हैं। 23, 2.5 के बाद आखिरी गेंद 3रे ओवर की। शेख जुनैद सामने है गुलडान जो कि बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। नासिर रसूल नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, और इसमें दबाव की स्थिति साफ लगती हुई शेख जुनैद पर। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 24, 2.5 के बाद। और आदिल गुलडान सामना कर रहे हैं, नासिर रसूल नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे है, और ऐसे में देखना होगा कि यहां से क्या सफलता मिलती है अथवा नहीं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। मुजफ्फर और मुर्तजा शेख के साथ सोफी इजाज भी बने हुए इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं।
और अपना प्यार और विचार देते हुए शेख जुनैद इस समय ओवर की आखिरी गेंद लेकर के इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अंतिम समय में बल्ले को वहां पे दिशा दी गेंद को बल्ले के जरिए तिरछे बल्ले के साथ ऑफ साइड में 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन की सहायता के साथ ओवर भी पूरा हुआ। तो इस प्रकार से बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, हालांकि कुछ खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन देखने को मिला शुरुआत में सिटी क्लब कपवारा द्वारा, लेकिन अभी तक कुल मिलाकर 25 रन बने हैं। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, विकेट खोया नहीं है, अच्छा कहा जा सकता है डाडू रेंजर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि शुरुआत में विकेट को सुरक्षित रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, गैप तलाशने होंगे, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और आप 155 तक का अवश्य पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों का प्रयास होगा यहाँ पे छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का प्रयोग करें और बॉलिंग चेंज काफी महत्वपूर्ण होगी कप्तान के लिए, जहां तक सिटी क्लब कपवारा की टीम का सवाल है, क्योंकि विकेट्स अभी तक मिले नहीं है। 3 ओवर में 25 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। और आदिल खान धन्यवाद, आरिफ गनई भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं रेशी इशफाक के साथ, साकिब बशीर धन्यवाद। चौथे ओवर की शुरुआत और पारी का चौथा ओवर लेकर के एक बार फिर देखना होगा क्या अबरार पीर के पास ही गेंदबाजी होगी, जो कि कोटे का दूसरा ओवर लेकर के तैयार। गुलडान 19-13 गेंदों से और नासिर ने 4 रन बनाए हैं 5 गेंदों से, कुल शौक 25। नजीर ठाकरे और जुबैर खान भी मुजम्मिल अरीब के साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद गुलडान है सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फिर लेग स्टंप से बाहर, फिर दिशाहीन गेंदबाजी और एक बार फिर वाइड का इशारा अंपायर का। लगातार अपनी दिशा और लंबाई में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं गेंदबाज और एक अतिरिक्त दबाव जो गेंदबाजों का होना चाहिए वो फिलहाल धीरे धीरे से हाथ से निकलता हुआ और बल्लेबाजों को अवसर मिल रहा है जमने का। 1 रन की सहायता के साथ 26 रन चौथे ओवर में बगैर नुकसान के गुलडान और नासिर रसूल की जोड़ी समय प्रारंभ कर चुकी है डाडू रेंजर्स के लिए और अभी तक बढ़िया प्रदर्शन कहना चाहिए, क्योंकि विकेट मिला नहीं है सिटी क्लब के गेंदबाजों को। चौथा ओवर प्रगति पर 26 बगैर नुकसान के, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार धीमी गति की गेंद और अतिरिक्त तो चाल बल्ला चलाया और थोड़ा सा जल्दी खेले वहां पर आदिल गुलडान, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची बगैर किसी रन के। अच्छा आक्रमण यहां पर गेंदबाज का, वे जानते हैं ऑफ साइड में जो एक घेराव रखा है क्षेत्र रक्षण का, जो एक आक्रमण लगा के रखा है, जो आकर्षक फील्ड प्लेस में लगा के रखे, उसके अनुकूल गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज को मजबूर करना होगा वहां पर गलत स्ट्रोक लेने के लिए और ऐसे में आपको विकेट मिल सकता है। क्या इस योजना में सफलता प्राप्त होगी अथवा नहीं ये गेंद, और इस बार फिर उसी दिशा की गेंद, पिछले गेंद की पुनरावृत्ति, शानदार गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कोण बनाते हुए विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के 26। 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 2 डॉट गेंदें शुरुआत में, 1 वाइड और कुल मिलाकर अभी तक 1 रन आया है इस ओवर से। अच्छा ओवर कटता हुआ और यहाँ पे लाइन और लेंथ को सही दिशा में रखना होगा, सही दिशा के साथ लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी और यहाँ पे कड़ी परीक्षा, एक चुनौती पूर्वक गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को अगर शुरुआत में कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि गुलडान की निगाहें एक बार जम जाएं तो निश्चित तौर पर काफी घातक हो सकते हैं आने वाले समय में और ऐसे में शुरुआत पे उनका विकेट चटकाना होगा सिटी क्लब की टीम को। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट चले, ये गेंद इस बार पटकने का प्रयास, इस बार बाप लिया, खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद वहां पर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका, गुलडान के बल्ले से तलाश में थे, अंततः सफलता मिली और गुलडान के इस जस्ट मौका चौके के साथ ही कुल योग बढ़ता हुआ डाडू रेंजर्स कश्मीर का 30। चौथे ओवर में 3.3 के बाद बगैर नुकसान के अच्छी शुरुआत, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का और आत्मविश्वास वहां पर लौटा होगा गुलडान का, जो कि एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, आक्रामक खेलना जो है वे पसंद करते हैं और उनमें जो प्रतिभा है, जो कला है, उसका बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं पे इब्रार पीर की अगर हम बात करें, उनके पास भी अच्छी खासी कला है, एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जूझ रहे हैं, एक विकेट शुरुआत में मिले और वह एक अतिरिक्त दबाव के साथ गेंदबाजी करे। अगली गेंद दे करके इस बार गुलडान ने इसको सफलतापूर्वक हालांकि रक्षात्मक रूप से रोका, बल्ले के बीचों बीच टकराने पर दिया, रन लेना चाहते थे लेकिन फील्ड किया अबरार पीर ने अपने फॉलो थ्रू में बगैर किसी रन के। 3.4 पारी का ये चौथा ओवर और दूसरी पारी में 155 बनाने हैं डाडू रेंजर्स की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। साकिब बशीर धन्यवाद और पीर बुरहान भी खान अल्ताफ के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। वालेकुम सलाम, धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, अपना समय देने के लिए। और ऐसे में अबरार पीर इस ओवर में अगली बार गुलडान है सामने, उनके लिए गेंद फिर बड़ा प्रहार, फिर सफलता नहीं मिली, अपने स्ट्रोक से खुश नहीं है, गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में और अच्छा आक्रमण यहाँ पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद को रख रहे हैं। निर्णय सही है यहाँ पर, लाइन और लेंथ और दिशा सही है और ऐसे में इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता, थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव बनाना होगा। यदि आप डॉट गेंदे वहां पर बल्लेबाज को खिलाते हैं तो
निश्चित तौर पे कुछ अतिरिक्त दबाव जरूर पड़ेगा और ऐसे में काफी चांसेस रहते हैं विकेट मिलने के गेंदबाजों को, और वही कार्य इस समय बीच मैदान में चलता। 3.35 बगैर नुकसान के चौथा ओवर, आखिरी गेंद लेकर के गुलडान के लिए ये गेंद, और इस बार फिर बढ़िया गेंद, फिर खूबसूरत लाइन और लेंथ के साथ अंतिम समय में उसको देखा वाला छोड़ा विकेट कीपर के लिए। गुलडान ने ओवर पूरा हुआ, 4 ओवर की समाप्ति, 30 डडू रेंजर्स का स्कोर है और 155 का वे पीछा कर रहे हैं। चुनौती उनके सामने, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास बरत रहे हैं, बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। यहां पर देखना होगा क्या परिवर्तन गेंदबाजी में देखने को मिलेगा, क्या स्पिन आक्रमण हमें देखने को मिलेगा, और अवश्य है यहां पर परिवर्तन की, क्योंकि तेज गेंदबाज कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में स्पिन पे जो है नजर दौड़ानी होगी कप्तान को और स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण करना होगा। और अगर स्पिन गेंदबाजी से कुछ लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पे यह मुकाबला संघर्षपूर्ण, हालांकि अभी भी काफी समय है, 16 ओवर की गेंदबाजी है, 10 विकेट हाथ में, 30 रन बने हैं, लेकिन अगर यहां से 1-2 विकेट चटका लेते हैं शुरुआत में तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। क्रिकेट का पारा और जूनी भी मोहम्मद फारूक के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारे का ये 5वां ओवर, अबरारप्रीत ने 2 ओवर में 9 रन खर्चे। नबीतुल्ली गेंदबाजी सफलता उन्हें मिली नहीं, एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ इस ओवर में अब तक का गेंदबाजी देखने को मिली है। एक स्लिप, इस समय गेंद एक बार फिर शेख जुनैद के पास, और परिवर्तन यहां पर देखने को नहीं मिला। लगातार अपने तेज गेंदबाज पे विश्वास जताया है वहां पर कप्तान ने। जहां तक सिटी क्लब का सवाल है, शेख जुनैद राइट आर्म ओवर द विकेट, 5वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला हवा में, गेंद नीचे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के, संभवतः वहां पर वाइड का इशारा और 1 रन और, हालांकि नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद रन नहीं मिलेगा, लेकिन काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से और अंपायर का निर्णय थोड़ा सा लेट आया। 1 रन और खाते में जुड़ता, 31, 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। ये पारे का 5वां ओवर। सुहेल मल्क सोपोर से हमारे साथ बने हुए हैं, धन्यवाद। और एहसानुल हक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं शकील अहमद के साथ। अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, इस बार से ठीक लाइन और लेंथ के साथ मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद, अंतिम समय में बल्ले को नीचे करते हुए बैट और पैड मिला करके बल्ले के बीचों बीच टकरा ने भर दिया बगैर किसी रन के। 31, 4.1 ओवर की गेंदबाजी, नासिर रसूल 4, आदिल गुलडान 23, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। गुलडान इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है, शेख जुनैद गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं वहां पर विकेट कीपर, ये देखते हुए एक विकेट की आवश्यकता है और इस बार कदमों का इस्तेमाल क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, सफलता मिली नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तरे में, थोड़ी सी जल्दबाजी में यहां पर दिखाई दे रहे हैं नासिर रसूल, और शुरुआत में थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपके पास 16 ओवर की गेंदबाजी अभी आनी बाकी और ऐसे में 31 रन बने हैं, विकेट को ये गंवाया नहीं है। आदिल गुलडान उनके पास पहुंचे, कुछ बातचीत उनसे हुई और अब वापस अपने स्थान पर पहुंचते हुए बल्लेबाज नासिर रसूल 31। आसिफ गफार मीर, धन्यवाद। एजाज अहमद भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए पीर बुरहान के साथ, और सुहेल मलिक जो है वो इस समय हमारे साथ बने हुए। 154 बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर। सिटी क्लब कपारा की टीम ने 155 रनों का न्योता है सामने, 155 बनाने हैं मुकाबले को जीतने के लिए और अब तक 4.2 में डडू ने 31 बनाए हैं। ये गेंद बराबर स्टंप से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, गैप का बेहतरीन इस्तेमाल, लाजवाब प्लेसमेंट और टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मुखरा चौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंच चुका है। डडू रेंजर्स कश्मीर का कुल चौक 35, 4.3 नासिर रसूल के बल्ले से निकलने वाला ये चौका और इस चौके के साथ ही कुल चौका बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है, 35 रन। आदिल खान लगातार इस मुकाबले में बने हुए हैं और 35 रन 4.3 के बाद अगली गेंद लेकर के शेख जुनैद चले और इस बार फिर बड़ा प्रहार, ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, काफी आगे निकल चुके थे गुलडान, लेकिन सुरक्षित क्रीज में लौटना पड़ा। वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन की सहायता के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36, 4.3 के बाद निर्धारित 20 ओवर का यह कोटा होगा। 155 बनाना है मुकाबले को जीतने के लिए डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। 36, 4.3 के बाद 3 गेंदों का आना बाकी, 5वां ओवर, पावर प्ले प्रगति पर और ऐसे में शेख जुनैद लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले छोर से। इस बार फिर बढ़िया गेंद पैड पे टकराई, जोरदार अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, नकारा। अंपायर ने इसको स्वीकार नहीं किया, कोई क्षति नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 36, 4.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी, 5वां ओवर इसमें वर्तमान स्थिति में चलता हुआ।
शेख जुनैद जो कि तीसरा ओवर अपने कोटे का और कुल मिलाकर 5वां ओवर सिटी क्लब की ओर से और प्रयास कर रहे हैं। एक विकेट यहां से मिले लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है और मुख्य योगदान दोनों बल्लेबाजों का। प्रयास कर रहे हैं कि शुरुआत एक बेहतरीन दें, एक ठोस विश्वसनीय आधारशिला रखें अपनी टीम के लिए ताकि आने वाले बल्लेबाजों को कोई दिक्कत ना हो और सफलतापूर्वक वो इस चुनौती को स्वीकार करते इस लक्ष्य तक पहुंच पाए। 36.4 के बाद अगली गेंद जुनैद की और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लायों के सारे खूबसूरत लाजवाब लेकिन उससे भी बेहतर क्षेत्र रक्षण और निश्चित तौर पे यहां पर प्रशंसा की सभी दर्शकों ने। एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और नासिर का व्यक्तिगत योग इस एक के साथ ही आगे बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा है। कुल योग 37.4 के बाद। धन्यवाद शाह फैरोज और साहिल मीर। सईद सज्जाद भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण कारहमा स्पोर्ट्स स्टेडियम कुपवारा से रमहाल क्रिकेट लीग की यह सफल प्रतियोगिता आयोजन सफलतापूर्वक और पूरा श्रेय जाता है यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, खासकर चीफ ऑर्गेनाइजर बट मूसा जिस प्रकार से कार्य किया है और लगातार उनके अंतक काविशों के कारण ये सफलतापूर्वक प्रतियोगिता धीरे धीरे से अंतिम चरण की ओर। ऐसे में शेख जुनैद ओवर की अगली गेंद इस बार गोल्डन लेकिन हवा में गेंद काफी ऊपर हवा में पहुंची है। नीचे खिलाड़ी संतुलित लेकिन एक बार फिर क्या है छोटा और यहां पे खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, दर्शकों का शोर गूंजता हुआ और इस बात का परिचय देता हुआ कि यहां पे गोल्डन को एक और जीवनदान मिला और खराब क्षेत्र रक्षण को मिलाकर इस प्रकार के क्षेत्र रक्षण से बचना होगा। 2 रन और खाते में और ऐसे में ओवर भी पूरा हुआ। 5 ओवर की समाप्ति हुई है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 बगैर नुकसान के गोल्डन 25 और 10 गेंदों से 8 पे समाप्ति नाबाद है नासिर रसूल। तो कुल मिलाकर अगर बात करें क्षेत्र रक्षण की, खराब क्षेत्र रक्षण आज देखने को मिला है सिटी क्लब कुपवारा की टीम द्वारा। Too many drop chances, catch after catch going down. No one can believe, but this is reality unfolding here at Kariyama Sports Field. It's 5 down. We're still in the power play over here. It's 39 without loss. Dadoo Rangers. Both the batters living by luck, by chance. And especially Guldan there, dropped again and again. And he's lucky to survive that scare. He's still there. He's unbeaten on 25 of how many balls? 20 balls. On the other side, he's got Nasir Rasool on the other side. But City Club now in a hurdle. The question is how to hold on to the catch. How to take and how to gobble. They dropped too many easy ones. Easy peasy chances gone down today. 39 without loss, chasing 155. Not a big deal as per Dadoo Rangers and their packed up side is concerned. Well, talking of RCL Ramal Cricket League, credit goes to Buck Musa and his entire panel for hosting such a wonderful league, defying all odds, coming together as a unit, fighting it out. But we all need to understand that it's our prime duty to support these boys who are trying to promote cricket here in Northern Frontier District of Kupwara, which is also believed to be border district. We got 39 Fernand Umar and others, and he's talking about approach from City Club over here that he writes in something special and I won't read it out. Thank you very much. He's talking of respect and they're showing a lot of they're trying to respect the visitors over here, and hostess are dropping catch after catch, and it's catch after catch going down. But hostess need to understand that we are here to compete against the likes of Dadoo Rangers, but Dadoo Rangers are trying to go off to the bowlers. It's 39 for none after 5, over number 6, last over of the mandatory power plays here. Abrar goes away from us. First ball, little back and cross, plays it onto the onside, gently done, escapes for quick single, and with that run score moves on to 40 without loss. Catch win matches, and majority of catches were put down today by City Club players. I saw Anwar Masoodi dropping one, and someone at long off right now just a while ago he dropped a dolly, and it was Umar Masoodi who dropped that dolly, trying to reverse cup, and it's 40 for none. Here is Abrar again, goes away from us, and this time it's again in the air, but safe enough. Phil gives the chase. Can he get there? No, doesn't. Ball wins the race, and look at the outfield. It is electric quick, and it races away, and
doesn't bother to keep it down, knows that fielders are up inside the 30 yard, using that field restriction to perfection, and that turn him another 4. That 4 takes it to 44 for none in over number 6. That were brought to you by Just Bukhara. As we watch Abrar Pir again, gone for 14 in his third over. So far, nice, economic, up to the mark Abrar Pir, but need to keep Adil Guldan under check. He's gonna go after you, he's gonna attack you, and let us see how Abrar will react to the situation. Goes and bows, good delivery, better line this time, and batter goes right behind the line up the ball. Bat and pad close together, plays it only as per a silly mid-off area is concerned, and ball goes across and does that mop up in style. It's 44 for none. 155 is what Dadoo Rangers are in pursuit of. And we have an update coming from Lords, England at 190 for 5. Here is Abrar again, goes and bowls, trying to hook that turn, and in the end ball flies over the slip. Cordon down to his third man for more. Lucky escape again. Another boundary coming, and it's called the fortune favours the brave. Brave enough, courtesy Adil Guldan there, throwing bat at everything, and he throws kitchen sink at that one, and it eludes that slip corner, and the wicketkeeper runs down to his third man for 4. 48 for none, chasing 155. Abrar again goes away from us, and now that is class up the back foot, and look at that, hammered straight past the ball of 4 more. And that was brought to you by Just Bukhara, and Guldan gets to his 50 in style of just 35 balls, 52. What a knock! An incredible knock. Dropped twice or thrice, but he's still cashing on. And look at that one. And sorry to say, it's 52. 50 comes up for Dadoo Rangers, and I threw out. Guldan gets to the on X ball. Look at that scare caught. But what a take! What a catch! Guldan is surprised. He's lip-locked, shell-shocked. There's no answer to that. What a gobble. Excellent catch. Acrobatism at its peak. Somebody talking of destructive and destruction. And he was trying to demolish the bowling attack. But in that process, he perished to that audacious scare-caught. I thought that this will run down to the fence. But the man in the deep does well, holding on to the ball. First blood is drawn, and first success for Stick Club. They are delighted, they're celebrating, even crowd putting their hands together for that boy in the deep who took that blinder, absolute blinder. Again, Masoodi, the man who dropped once, the same man, but now takes that blinder there. Prior to this one, he was right underneath the ball, stationed himself underneath, but he dropped then. Now he's taken a blinder. It's 52 for 1. Adil Wani is new man in, and he's another talented lad from South Kashmir. He's having a lot of experience, and he need to bat sensibly out there. He need to take responsibility alongside Nasir Rasul. Now Nasir can break free because Guldan is gone on 37. It's 52 for the loss of 1, and we got Khalif and then Zubair and others. Thank you all the beloved viewers for your love and support. Keep watching and keep supporting Giga Sports Time. It's your channel on your disposal again. It's 52 for 1 after 6 hours. Mandatory power play comes to an end, and finally some respite, some celebration, and some relief to be precise. And now if we look at Stickler boys, and they're relieved quite a bit on the field there after getting rid of the Dangerman, who is running away with the scorecard, Muzammil and others. Thank you very much. 52 for 1, chasing 155. We are in over number. We're going to be in over number 7. It's 6 done. Let us see how Adil Wani and Nasir will apply at just Dadoo Rangers. They will try their level best to go up to each and every ball, because Stick Club dropped too many chances today, and they will try to use that aerial route in between, because they're looking a little uncomfortable out there as per the fielders are concerned. They dropped too many chances today. Yeah, he took a blind, Masoodi in the deep there, but prior to that, few of them dropped to dollies. New man Adil Wani, he need to bat till the very last ball if Dadoo want to win this one.
without any harm. And if they want to win this one quite comprehensively, they need this pair to bat till the very last ball. Here is the fresh over. Raja Tanvir for the first time. Spin is here. And captain goes to his premium spinner over here. And finally Raja Tanvir bowled the very first ball. Nowadays Raja is picking up wickets. Can he do once more for his team? And paddles that one. And somebody is talking of run out is on. But both the batters scamper through for that brace, pushing hard and harder there. And in the end getting a desired result with that brace. Score moves on to 54 for 1. And Sajjad Ibn Abdullah writes in, Walaikum Salam, thank you. Thank you very much, sir. Thanks a lot. It's 54 for 1. We are in over number 7. Here is Raja Tanvir. Again trying to pedal it away. And we'll have to wait and watch improvising. And that one races away. Gone fine down to the fine leg fence for 4. And that for brought to you by Just Bukhara. Score moves on to 58 for 1. Look at that. Improvising again and again. And Raja Tanvir is becoming predictable out there. Last time he picked up 4 or 5 wickets at Chandrahama. And today he's unable to display that kind of bowling over here. He's unable to use his tricks over here. He need to be trickster with the ball. Need to weave a web. Create some panic. And try to bowl in the right areas. Next ball. And batter camps back. Plays it back at the bowler's hand. Blocked it. And now shadow practicing what should have been done. It is a dot ball. 58 for 1. Here is Raja again. And plays it back at the bowler's hand. Trying to stop the ball. Unable to stop it. And it goes past the ball. 1 more run added. 59 for 1. Sensible cricket going on. A brace followed with a 4 and then a single coming. 7 of 3 balls so far. Good over eventful 1. And this is how you need to pace your innings. And that was lacking when Stickler were batting. The batters were unable to rotate strike. They were unable to use gaps in between. But Dadoo Rangers and the batters are using gaps. Trying to improvise in between. And keeping the bowlers at bay. And keeping them away from picking up wickets. Next ball. Sweeper cover is in place. There is Abrar Pir. He sends in a good return. Can't prevent the 2 batters from escaping for a quick single. And with that single, score moves on to 60 for the loss of a wicket. The lone man out this afternoon, Adil Guldan. But the man laid the strong foundation for the big chase. Scored 37. And that was much needed 37. And it was a fiery knock, enterprising one. He was going after everything, throwing bat at everything. And in the end it was Umar Masoodi who cut short his innings and got the last laugh. It is going to be over number 8 about to start, and it was going to bowl. We'll have to wait and watch. Is there any change in the bowling department? Only the time will tell us. Bright sunshine out here, little dispersed clouds, but way away from the centre. Almost in Karen area, but this is beautified centre of Karihama. We got good attendance over here. People thronged into the stadium to witness this all important cricket match. Mahi, thank you very much. And it's 60 for the loss of a wicket. Over number 8 is about to start. Tahir Mir. Oh, first ball. What a delivery. What a delivery there. Absolute peach. And bat had no idea, no answer to that one. And he still manages to keep it out. And it goes down towards wicketkeeper area, so no harm done. Things still under control. It's 60 for 1. Tahir need to deliver because City Club is in desperate need of wickets. They require wickets over here. They need to get rid of this pair in no time. And look at that run. Oh, nicely done. This could be tight, but the Vivod Chai comes in. It was yes, no in the end, deciding to scamper through. It's 61 for the loss of 1. Second ball, we saw single coming. Yes, no in between, but in the end, deciding against it and responding to each other. Scamper through quickly. 1 more run added. Thank you, Mahi, once more, buddy. It's Tahir Mohideen again for the first time operating. Another good delivery, right on money. Not trying too much, not trying with the pace,
just trying to keep things tight, simple as you want there. And that one right on money in that corridor, in that channel of middle and off, which is an ideal line for each and every bowler, be the spinner, be the pacer. It was up to the mark. It was like that. You miss, I hit. Thank you very much, Sajjad Sahab. And here he goes again. Tahir Mohiddin, roar from the crowd. Oh! And that's straight, man. They're at long off. One more bites the dust. But look at that drive from Nasir. I thought this will race away. This will go all the way. Using the crease there. And within the crease, trying to loft it. But finds that long off in place. And Tahir Mir among the wickets. He finds his man. More joy. And it's time to rejoice. Celebrate. They deserve every bit of it. And now that some tight liner length paying rich dividends. That was right on money. Absolute good delivery. But the batter was right behind the ball. There was no need to play uppish. Need to keep it down, but couldn't do that. Ended up straight into the hands. Reverse cupping man there takes it. And bizarre run out for England. Somebody talking of. And England nowadays trying to replicate. They're trying to play aggressive cricket in a 5-day. They're trying to change the entire course and complexion of test cricket. But in that process, they lost one over here. And it means it's joy for Aussies there. And it's joy for Steve Club over here at Cardiff Sports Field. 61 for 2. RCL at its level best. One more big game coming up. And we have... everyone is waiting with ravishing feasting eyes that this match should go down to the wire. And we all believe that this match isn't over yet. It is still on. And Sajjad Ibn Abdullah writes in again something. Read my comment. It isn't easy, sir. But I will try my level best. Don't worry in between. What we want to convey, it's 61 for the loss of 2. We are in over number 8. As Tahir Mir finds his first wicket. Goes away from us. Tanish's new man in. Is it a no ball? Yes, it does. It is a no ball. Overstapped. Tahir Mir like ball overstapped. Just over the crease there. Popping crease, and it is a no ball, so he need to reball that one. With that freight, it is 62 for 2. Chasing 155. Dadoo Rangers require now below 100 now. And it should ease up things for Dadoo Rangers and the rest of the batters, because anything below 100, it will mean that you are still in driver's seat and you got a job to do, but you feel that there is little pressure because of that scorecard. Here he goes away from us. 62 for 2. And trying to unleash, but find a Sheikh Junaid in place. Just a single. And that single will take it to 63 for 2 after. Is it 8 done? Or 1 ball remaining? We'll have to wait and watch. We got Samir Ibn Akbar writes in. Thank you very much. Thanks a lot, buddy. Jiggy Sports Time never compromise on quality. But we're trying our level best. It is your love which makes it possible for us. And together we progress. And together we look forward to different avenues. It's 63 for 2. We are in over number 8. Tahir, can he find one more over here? Can he get one more over here? Is he going to get that? Goes and bows. Lapped along, shouldering his arms in that test cricket style. And with that, successful comes to an end. It's 8 done. 63 for the loss of 2. Chasing 155. It's over to you, Nazir. धन्यवाद. 7 अथवा 8 ओवर की समाप्ति हुई है. 63 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे. डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम की अगर बात करें तो अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए 92 रनों की आवश्यकता. 12 ओवर का खेल बचा है. 72 गेंदें अभी भी शेष है और 72 गेंदों से 92 रन बनाने हैं. 8 विकेट उनके पास. लेकिन यहाँ पे संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रही होगी. छोटी छोटी साझेदारियां काफी महत्वपूर्ण होंगी डडू रेंजर्स के लिए. गौहर लगी वहां पर पहुंचे हैं दोनों बल्लेबाजों के पास. नासिर और दानिश और आदिल वानी जो इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं. आदिल वानी ने 2 बनाए हैं और दानिश ने 1-2 गेंदों से. 1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी की है ताहिर ने. 1 सफलता और 3 रन दिए हैं. रईस मलिक का अब एक और परिवर्तन गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है.
क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पूरे 155 बना रहे हैं मुकाबले को जीतने के लिए। दानिश और आदिल वानी, दो दिग्गज खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं डैडू रेंजर्स कश्मीर की ओर से। और धन्यवाद समीर इब्ने अकबर अपना प्यार विचार देने के लिए, और स्वागत करते हैं पूरी कमेंट्री टीम द्वारा आपका। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए, बने रहिए। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ और क्रिकेट जगत का एक ऐसा मंच जहां से हम सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाते हैं, भले ही वो कोई भी क्षेत्र हो, और आप तक बेहतर से बेहतर प्रसारण लेकर के पहुंचने का हर संभव प्रयास रहता है पूरी टीम द्वारा। और ऐसे में 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। रईस मलिक परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करेंगे, दानिश उनके सामने है। और ऐसे में अभी भी 92 रनों की आवश्यकता 72 गेंदों से। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 9वां ओवर, पहली गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद लेगो मिडल पे आ रही थी, हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में धकेला। काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा वहां पे क्षेत्र रक्षण को, जब तक वे आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, और 1 रन की सहायता के साथ कुल योग 64, 2 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी। पारी का ये 9वां ओवर, और ऐसे में गेंदबाजी रईस के पास परिवर्तन के तौर पर, और देखना होगा ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं। क्या यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलवा पाएंगे ये गेंदबाज अथवा नहीं। आदिल वानी है सामने रईस के, एक बार फिर राइट आर्म उनकी ये गेंद, और ऑफ स्टंप से बाहर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला अड़ाना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए। गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जा रही थी, सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद, संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 64, 2 विकेट के नुकसान पे 8.2, 9वां ओवर पारी का चलता हुआ, और ऐसे में आदिल वानी और दानिश प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, और वहीं पे गेंदबाजों का प्रयास होगा कि एक विकेट ऐसे तैसे करके यहां पे चटकाया जाए और एक अतिरिक्त दबाव बनाया जाए डैडू रेंजर्स कश्मीर की टीम पे। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार दूर वाले छोर से, इस बार हवा में है गेंद, लेकिन काफी पीछे है खिलाड़ी वहां पे। हालांकि स्क्वायर लेग के पास खिलाड़ी जब तक पहुंचते तब तक गेंद जमीन पे गिर चुकी थी, और निश्चित तौर पे एक रन भी मिला वहां पर आदिल वानी और दानिश को। 1 रन और खाते में 65 पे 2, 8.3 के बाद। पारी का ये 9वां ओवर, और शांत धीमा क्रिकेट, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या। रमहाल क्रिकेट लीग, जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे से अब अंतिम भाग की ओर, अंतिम पड़ाव की ओर, अंतिम चरण की ओर। और ऐसे में डैडू रेंजर्स 155 का पीछा कर रही है इस मुकाबले में, आज के दिन के मुकाबले में। इस बार ऑफ स्टंप पर आते गेंद, प्रयास किया वहां पर डाइव लगाते हुए, हालांकि पहले प्रयास में गेंद को रोक नहीं पाए, लेकिन दूसरे प्रयास में सफलतापूर्वक रोका। इस गेंद पे कोई रन नहीं आया। अच्छी रणनीति यहाँ पर गेंदबाजों की, सटीक लाइनों लाइन के साथ, और गति का ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर रईस मलिक। ये अच्छा निर्णय है गेंदबाज का, और ऐसे में अंकुश लगा हुआ रन गति पे। 66, 2 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी। मलिक मंजूर, वानी जावेद, क्रिकेट कफवारा और जुबैर खान भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े रहने के लिए, और एक अंक हमारे व्यूअर्स जेके स्पोर्ट्स टाइम की इस पूरी फैमिली में अपना समर्थन सहयोग देते हुए। 66 पे 2, 8.3 के बाद ये पारी का 9वां ओवर। कारहमा स्पोर्ट्स स्टेडियम कफवारा इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत, लेकिन पीछे खिलाड़ी है ऑन साइड में, वे गेंद को फीड कर लेंगे। सफाई के साथ उन्होंने गेंद को फीड किया, चहलकदमी करते हुए आदिल वानी और दानिश ने 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 67, 2 विकेट के नुकसान पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी। नासिर अली, वालेकुम सलाम, और धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। 67 रन बन चुके हैं डैडू रेंजर्स का। कुल योग धीरे धीरे से प्रयास कर रहे हैं अंतिम चरण तक पहुंचने का, और इस बार फिर पटकने का प्रयास, वहां पर जोरदार अपील, लेकिन स्वीकार नहीं किया अंपायर ने, नकारा। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, और कोई क्षति भी नहीं यहाँ पर डैडू रेंजर्स के लिए। इस गेंद पे कोई रन नहीं आया। आदिल वानी प्रयास कर रहे थे स्ट्रोक खेलने का, लेकिन कुछ अधूरे मन से वहां पर खेलना चाहते थे, और पूरी तरह से बीट किया गेंदबाज रईस मलिक ने। 3 पे नाराज 7 गेंदों से, और 3 रन बनाए हैं। दानिश ने 5 गेंदों से। दोनों बल्लेबाज 3 रन बना करके इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं, और कुछ असहजता देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। संयम, आत्मविश्वास के साथ अभी तक बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन रईस द्वारा। एक बार फिर ये गेंद, इस बार फिर बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, कट के अंदाज में खेला जरूर था, लेकिन वहां पे शानदार क्षेत्र रक्षण सिटी क्लब का, और 2 विकेट लेने के बाद दोबारा से एक जान सी पैदा होती हुई वहां पर क्षेत्र रक्षण में, और ये अच्छा कहा जा सकता है सिटी क्लब कफवारा के दृष्टिकोण से। ओवर पूरा हुआ, 9 ओवर की समाप्ति 7 अतिरिक्त के साथ। इसमें कुल योग डैडू रेंजर्स का 68, 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल बचा है, यानी कि अभी भी कुल मिलाकर 9 ओवर
11 ओवर आने बाकी, 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, 66 गेंदें बची हैं। तो धीरे धीरे से अब लक्ष्य जो है, हालांकि अभी भी क्रिकेट के इस महान खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता अंतिम चरण तक, जब तक का आखिरी गेंद न फेंकी जाए। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल इसे कहा जाता है और अनिश्चितताएं कब घटेंगी ये कोई कल्पना कर नहीं सकता। लेकिन इन परिस्थितियों में देखना होगा, एक विकेट चटकानी होगी सिटी क्लब की टीम को, क्योंकि धीरे धीरे से एक साझेदारी पनप रही है। बड़े ऐसे तैसे करके वे रन बटोर रहे हैं और कुछ खराब गेंदें अवश्य मिल रही है वहां पर। 68 पे 2, 9 के बाद 10वें ओवर की शुरुआत। दानिश 3, 5 गेंदों से, आदिल वानी 4, 8 गेंदों से, रईस मलिक ने 5 रन खर्चे। पारी का 10वां ओवर लेकर के तैयार सामने वाले छोर से। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार पैड पे टकराई, लेग स्टंप पर विकेट कीपर जा रहे हैं और 1 रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लगभग सीमा रेखा की छेद से, और 2 रन और खाते में जुड़ते हुए अच्छी रणनीति के तहत दोनों बल्लेबाजों ने ये रन पूरे कर लिए। और ओवर थ्रो के रूप में वहां पर एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, तो कुल मिलाकर संभवतः 3 रन यहाँ पे मिले दोनों बल्लेबाजों को, डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। और 3 रनों की सहायता के साथ कुल योग अब बढ़ता हुआ संभवतः 71 पे पहुंच चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर में। और यहाँ पे विकेट की आवश्यकता, एक सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता, सकारात्मक सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और वहीं पे अगर बल्लेबाजों का प्रयास करें, बल्लेबाजों की बात करें, तो उन्हें प्रयास करना होगा सिंगल जबरदस्त स्ट्राइक को रोटेट करें और खराब गेंद को सही नसीहत दें, अच्छी गेंदों का सम्मान रखें। और ऐसे में जो उनके अंदर कला है, जो प्रतिभा है, उस कला और प्रतिभा का प्रयोग करें और ऐसे में आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 155 बना रहे हैं मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार जो कि पारी का 10वां ओवर, ताहिर गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 विकेट पे ले चुके हैं। अपने पहले ही ओवर में उन्हें सफलता मिली थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, और मात्र 3 रन उन्होंने खर्चे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पे विकेट की आवश्यकता रहेगी और ऐसे में इस समय एक शांत धीमा क्रिकेट। लेकिन अगर बात करें मुकाबले की, दबाव की स्थिति जरूर होगी यहाँ पे सिटी क्लब का पारा के बल्लेबाजों पे, क्योंकि शुरुआत में 2 विकेट मिले हैं और उसके बाद जूझ रहे हैं विकेट के लिए, लेकिन अभी तक सफलता मिल नहीं रही है। एक साझेदारी पनप रही है बीच मैदान में। 68 पे 2 और ये पारी का 10वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। और इन परिस्थिति में देखना होगा किस प्रकार से यहाँ से अब बल्लेबाजी होगी। मुंतजिम आए हैं वहां पर दानिश और आदिल वानी के पास, उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं जहांगीर नबी और शाहिद मुश्ताक, फ्रेंड्स 11 भद्रगाम और सुहेल भट्ट भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ बने हुए, और यहाँ पे एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। रमहाल क्रिकेट लीग का ये 3रा सत्र है, समर एडिशन वर्ष 2023 के अंतर्गत। और जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं और आप भी जानते हैं, एक बेहतरीन सफल और सफलतापूर्वक आयोजन इस प्रतियोगिता का, जिस प्रकार से यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने किया है, और खासकर राबर्ट मूसा का जो नाम है सबसे ऊपर आता है, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पारी को अंत तक पहुंचाया है, इस प्रतियोगिता को अंत तक पहुंचाया है। प्रयास कर रहे हैं सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता का अंत हो और एक बेहतरीन प्रतियोगिता, अंत में ऐतिहासिक प्रतियोगिता ये देखने को मिले। और उसी मुद्रा में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। फिलहाल 10वां ओवर पारी का चलता हुआ, ताहिर गेंदबाजी कर रहे हैं और स्कोरबोर्ड पे अभी भी 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। आदिल वानी और दानिश की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, और ऐसे में ताहिर सामने वाले छोर से 71 पे 2, 9.1 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 10वां, और ताहिर गेंदबाजी लेकर के तैयार सामने है दानिश, जो कि 3 पे नाबाद है 5 गेंदों से। आधी पारी समाप्त होने को है। ताहिर एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, और इस बार गेंद को खेला हवा में, सोख वहां पर लाजवाब कैच पकड़ लिया। जितने भी प्रशंसा करे क्षेत्र रक्षण की उतने कम, अंतरराष्ट्रीय सर की याद दिला दे। और निश्चित तौर पे कहना चाहिए कि ये विकेट वहां पे नहीं मिला है, बल्कि जीत की और एक आसान कदम यहां पे बढ़ाने का एक सक्षम सफलतापूर्वक जो है सावधान मिला है कुपवारा क्रिकेट क्लब की टीम को। और राजा तनवीर ने ये कैच लपका है, क्या लाजवाब। और हमने इससे पहले भी जो है बातचीत की थी, कल्पना कर रहे थे और मंत्रणा कर रहे थे कि शुरुआत में कुछ खराब क्षेत्र रखेगा प्रदर्शन, और उसके बाद जब 1 विकेट मिला और एक नई जान पैदा होती हुई यहाँ पे सिटी क्लब कुपवारा की पूरी टीम में 3रा विकेट चटका लिया है। बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय कैच लपक लिया, और ऐसे में 71 पे 3रा विकेट गिरता हुआ 9.2 के बाद।
An absolute screamer from the veteran Raja Tanvir. It was never an easy catch, but this man who was flying in the air got his both hands to the ball and plucked out of thin air. That was an absolute screamer. And Dadoo Rangers, they lost their third one. They are 71 for 3. We are into the 10th over of the game. Halfway done. 4 deliveries to go. It's Asif Manzoor, the new batter, walking out. And who else? It's Taimir. He is taking wickets on regular intervals, and he is taking the hopes of Stikalab Kufara to their new heights, to their new stages of the league of RCL 2023. Taimir has picked up 2 wickets and given away 3 runs, and he's bowling his second over. Once again, crowd is allowing it. Again, that is an unplayable delivery, pitch of a delivery from Taimir. And the batter too good for the new batter Asif Manzoor. He had no clue to play that one. Pitched it up and that extra bounce. And Asif Manzoor had no clue to react on that one. Luckily he escapes there on an outside edge. And it's Taimir who is breathing fire out in the middle, and the crowd behind him are pulling the things up. They are allowing and they are sending their love to Taimir, and Taimir he is enjoying out in the middle. Look at that one. Look at the scenes at the center. Look at the roars of crowd. Again this time guided this one straight to the fielder, and they have taken a quick single. There was a fumble, and the fumble allowed better for a crossover, and the single will take score 72 for the loss of 3 wickets. It's Taimir, the man. He's a legend of a game. It was Kamid Daur, Kamid the man. It completely suits onto this one. The big man. The team was struggling. It was Dadoo Rangers batters. They were bossing the chase. And this man out of nowhere came in and has pulled the things back for Stikalab Kufara. Has picked up 2 big wickets and given away just 4 runs. Taimir once again is ready. Outside off stump, appeal for an LBW. But was going down the leg stump. And there is a chance the batter survives. It's Adil Wani. He is batting on 4 on 10 deliveries. On the other side it's Asif Manzoor and 1 in 2 deliveries. Last delivery of the over coming up. We're into the 10th over of the game. It's 72 for 3. 3 wickets down, 7 wickets in hand. Taimir, the man, is breathing fire out in the center. And he is allowing the chants of crowd. Once again is ready to Adil Wani outside off stump. He shouldered his arms. It's way outside the off stump. Umpire waving his arms. Wide it has been given, and the wide will take score 73. It's 73 for 3. Last delivery of the over coming up. What has Tahir Mir got for Adil Wani? What are Adil Wani's plans for the unplayable Tahir Wani here at the center of Karihama ground? Adil Wani, pressure from the crowd, pressure from the bowler. Both are on the batter there. And once again he is ready on the stumps, flicked away to the fine leg region for 4. 4 to end the over. And the 4 will take score 77. It's 77 for 3. We are done and dusted with the halfway stage of the game. 10 overs remaining, 7 wickets in hand. And they need 155 for all. And they are 77 for 3 in the 10th over. Adil Wani, he goes on 8. Asif is on 1. Tahir Mir is done with his second. Has given away 9 runs, picked up 2 big wickets. But the Sipil will be remembered for ages. The Sipil will be remembered for the entire tournament of RCL. He has pulled things back in just 2 overs, and it has lifted the separates of Stikalab. Their bowlers, they were lacking that courage, they were lacking that temperament, that rhythm. But once Tahir Mir comes into the bowling attack, after that they were just bossing the game. And Dadoo Rangers, they are now facing the heat, they are feeling the heat here at the center of Stikalab Kufara. But this team, they are known for these things. They are known for these unnatural things. And it's their veteran,
The two veterans won the southpaw, Raja Tanvir and then it's Taimir. This time outside edge, straight to the fielder, into his hands. They have come back, wanted the second one, but the batter denied, and it is a single, and the single will take score to 78. It's 78 for 3. We want to thank our viewers. Faisal is there, Saib Bunyan is there, Tahir Masoodi and Shaukat Mir. Thank you for joining us. Adil Wani is back on strike. He is on 8. It's Rais, the new batter, Rais Maulvi. Once again, pacey delivery on the stumps, flicked away, straight to the fielder, and it will be a single. Good bowling. They are not giving any room. But the thing is, the chances that went bagging in the previous overs of Adil Guldan's chances has almost taken Dadoo Rangers in this game. Else the game, it was all about stickle up. This time that is a pitch of a delivery, pacey on the stumps. Luckily he managed to cut that away. It's a dot delivery, but the chances they dropped of Adil Guldan and Nasir Rasool, beg your pardon. That will definitely hurt if Stickle Up did not make this game or the line. Once again, Rais Maulvi is ready to bowl. Asif Manzoor, the captain of Dadoo Rangers, is ready. This time again nudged it back to the bowler. 2 back-to-back dot deliveries, and they will pull things back for Stickle Up Kufara. Stick to that outside off stump channel. Bowl quicker deliveries. Dot deliveries, too many dot deliveries. That's gonna build pressure on Dadoo Ranger batters, and that's definitely the way to get the wickets. They are already 3 down. They are 79 for 3. We're into the 11th over of the game. Once a 7-run per over game till now. Rais Maulvi once again outside off stump, guided this one. There is a fielder, there is a protection into his hands, and it is a single. 3 singles from 5 balls. Well done, young man, Rais Maulvi. 3 singles in 5 balls. It's 80 for 3. Last delivery of the over coming up. Rais Maulvi, he will be bowling to Adil Wani. Adil, he is on 9. Rais Maulvi to Adil Wani once again. Again this time appeal, inside edge has saved the batter here. That's end of over number 11, and it's 80 for 3 as far as the batting of Dadoo Rangers are concerned. They are chasing the target of 155. Now 9 overs remaining, 7 wickets in hand. Where is the chase going? It's 11 done, 7. It's 80 for the loss of 3, chasing 155 target. It shouldn't bother Dadoo Rangers because they got a nice packed up side. They brought in all the experience over here. But interesting, Ben Stokes is trying to script a history at Lords. He's trying to rewrite, and he's trying to explain what Test cricket is in fact. And he's trying to create a history, and is he going to script that today? He's trying to make a statement that to one bowled at Lords today. He's trying to explain the game of cricket once more. It's 80 for 3 after 11 overs, 9 overs to go, and I'm astonished here in the com box. What's wrong with Stokes today? What he's doing with the bat? Brought up his 100 with 3 successive hits, 3 on the trot, 3 sixes on 3 consecutive deliveries to get to his 100 in a match which is almost running away towards Aussies, falling into the kitty and commence to Stokes. Funny commentary going on. Thank you very much. It's 80 for 3 after 11 hours. We're going to be over number 12, but Tahir Mahideen and his entire bunch, young group, talented lads, need to step up. They also need to warm up and wake up. It's the high time to cheer up, gear up, and bowl in the right areas. Make the batters toil out for everything over here. Don't go freebies. Make batters bat out of their skins and let them put premium on the wickets and bowl in the right areas. This is Ramal Cricket League quarter finale coming your way between
Stick Club Kupwara, and we got Dadoo Rangers Kashmir. It's pre-quarter match coming your way. Thank you, Tanveer Wani, and all other beloved viewers of JK Sports Time. Keep watching, keep sporting. I believe this match is going to be one great game of cricket. It's going to be fighting one, and both teams need to sweat it out, fight it out, put up a show, and bowlers will try to bowl well, batters will try to use their skills to perfection, and they will try to execute their plans to perfection. Let us see which will come out with the flying colours. Will it be the batting side of Dadoo Rangers, or will it be bowlers dictating terms with the ball, weaving a web here and there around the batters? Can they corner them? It's 80 for 3 after 11 overs, 9 overs, 54 balls. How many runs they require now? And I shall come to know. They chasing 155. Here is Tahir Madin with a fresh over, goes away from us. And Asim Mas campus back, little misfield, a little sloppy on offside. And look at Tahir Madin, he isn't happy with this fielder there. And he says, what are you doing there, man? And lets it go through. One more run added where there wasn't any run. He given away, he gifted a single to Asim Mas, and Mas with that single he goes to non-strike, and it's Adil Wani on strike. 81. How many they need now? 74 needed in 53 balls. Pretty close one, close encounter to me, but bowlers need wickets, batters need runs. Interesting game. Here he goes away from us again, and that's launched, and that done the distance. Huge 6 onto the rooftop, and look at the noise on that portion onto the rooftop. And with that 6, it means 87 is what on the board for Dadoo Rangers, and that 6 brought to you by Jas Bukhara, and that 6 will ease up quite a bit. It will definitely put pressure back onto Tahir Mohideen. Their Tahir bowled really well, kept things tight, but that was off tracker, that was hit me delivery. So does the batter. Here he is again, goes away from us, and again in the same direction, drivable length there, and with an offer, and offered him that hop volley again. Couldn't do very much with that one. It is a dot ball. 87 for 3, halfway stage in over number 12. Now they need a 468 or isn't 68, I think, and we'll have to wait and watch. Yes, 68 more runs needed. Here is Tahir again, and good delivery, cranking up, switching music there, and he's unhappy with himself. Bowled at that top track in between, that just took that pressure away from Adil Wani, but they haven't tried yet. Somebody's talking of it is Neon, something like that. Thank you, Neon, for writing in. It's 87 for 3. I'm unable to read out each and every comment, buddy. Thank you very much for your love and support. The way you love to write us, you drop your comments, and your assisting feedback is always welcomed. It's 87 for 3 in over number 12. Here is Tahir again. How Adil will respond. And we'll have to wait and watch. Shot for LBW, and turn down. And look at the roar from Tahir Mohideen there. An entire side went up in appeal. All were appealing. All were trying to make a statement. And umpire straight away shakes his head in disapproval. He believes there was killer inside edge. And Tahir is having a word with Adil Wani there. And Wani says, yeah, there was little inside edge on that occasion. Otherwise, I would have definitely loved to move back. And Irfan Mohideen Mir believes very close, touch and go. But in the end, good decision to me. 98 for 3. This is over number 12. And Tahir Mir is unhappy with himself there. Luck favors the batter there. Thank you, Shahid. Goes again, and now this time it was captain at stake, and he gets away with that one. It sneaked underneath the bat, and with that it's 12 done, 12 extras, and it's 98 for 3. 57 needed, or is it? Oh no, it's 88. It means 67 needed, I think. 67 needed in 48 balls. Still game on to me. An interesting game of cricket, intriguing, and anything can happen. The team which will win this one need gutsy approach, need positive and intent, and need
cool, composed approach to get there without any harm. It's 48 balls remaining and they need still 67 more runs to win this one. And it's call to prayer going on, and I will mute my voice over here in the com box. आजान के समय के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। 3 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा 12.1 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार स्टंप्स को कवर करते हुए ऑफ साइड में खूबसूरत स्ट्रोक खेला। हालांकि केवल 1 रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाजों को और 1 रन की सहायता के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। 3 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी। आदिल वानी 16 और आसिफ मंजूर उनके साथ हैं। तो देखना होगा वे किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेंगे। 2 दिग्गज बल्लेबाज बीच मैदान में। विकेट की आवश्यकता यहां पे सिटी क्लब के गेंदबाजों को और रनों की गति पे भी साथ में अंकुश लगाना होगा और इन परिस्थिति में देखना होगा यहां से वे किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। आगे गेंद देकर के तैयार। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक खेला। नो का इशारा वहां पर अंपायर का। तो एक और अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन वहां पर मिलता हुआ और 1 रन की सहायता के साथ 92। 3 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी। आदिल वानी और आसिफ मंजूर की जोड़ी समय बीच मैदान में डडू के लिए बल्लेबाजी करते हुए और सिटी क्लब का फर्क की अगर हम बात करें, रईस इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 रन खर्चे हैं। 2.2 ओवर की गेंदबाजी। सफलता उन्हें मिली नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये गेंद और इस बार लेग साइड में जगह मिली। ऊंचा लंबा स्ट्रोक और देखना होगा अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई और अब निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि बेहतरीन स्ट्रोक था लेग स्टंप पर। यह गेंद खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन और 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। 4 रन और जस्ट मौका चौका मिलता हुआ 96। 3 विकेट के नुकसान पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का और यहां पे रनों की गति पे अंकुश लगाना होगा। विकेट चटकाने होंगे अन्यथा धीरे धीरे से ये मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ। हालांकि अभी भी लंबा सफर तय करना है। 96 पे पहुंच चुकी है डडू रेंजर्स की टीम और अभी भी 59 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। 155 बनाना है रईस इस ओवर में अगली बार आदिल वानी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फिर जगह मिली, फिर निकाला। गेंद उस ओर जा रही है जहां पे खिलाड़ी तैनात है ऑफ साइड में। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और 1 रन की सहायता के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 97। 3 विकेट के नुकसान पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी। पारी का 13वां ओवर। आसिफ मंजूर 5-9 गेंदों से और वहीं पे आदिल वानी 17 पे नाबाद है 21 गेंदों से। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी समय पनप रही है चौथे विकेट के लिए और प्रयास कर रहे हैं सफलतापूर्वक इस लक्ष्य तक पहुंचने का। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर स्टंप को कवर किया। से मंजूर ने उसी दिशा में खेला। उस और खिलाड़ी पहुंच रहे हैं जब तक वे फील्ड करेंगे। सफाई के साथ वहां पर फील्ड नहीं कर पाए और संभवतः गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए मिस फील्ड का नतीजा उपहार के रूप में जस्ट वखारा चौका। 100 रन पूरे होते हुए डडू रेंजर्स कश्मीर के 101 रन इस समय कुल योग
3 विकेट के नुकसान पे आदिल वानी और आसिफ मंजूर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रही है और सफलतापूर्वक प्रयास 101 3 विकेट के नुकसान पे 12.5 155 बनाने हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी 56 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13वां ओवर पारी का वर्तमान स्थिति में चलता हुआ आसिफ मंजूर है सामने, रईस चले आसिफ मंजूर के लिए और इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर स्टंप्स को कवर किया और एक बार फिर वहां पे नो का इशारा। हालांकि एक रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, मना किया, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। नो बॉल का इशारा लगातार वहां पे समस्या गेंदबाज के लिए और उपहार के रूप में 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 103 3 विकेट के नुकसान पे 12.5 के बाद 52 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। 7 विकेट हाथ में, यहाँ पे सिटी क्लब की टीम को विकेट चटकाने होंगे और जिस प्रकार से लगातार वे रन खर्च कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे समस्या उनके लिए आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हालांकि क्रिकेट वहां चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं, स्लिप हटा ली गई है और ऐसे में गेंदबाजी रही। फिर ऑप्शन से और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जस्ट मौका छक्का। ये आसिफ मंजूर के बल्ले से गेंद सीमा रेखा से बाहर, असंभव थे आदिल वानी थे और उनके बल्ले से ये स्ट्रोक, क्या लाजवाब बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन कर रहे हैं और एक और जस्ट मौका छक्का मिलता हुआ 109 पे समझते पहुंचा दिया। कुल योग 13 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 विकेट खोए हैं आदिल वानी 22 गेंदों से और आसिफ मंजूर उनके साथ बेहतरीन सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पे चिंता देखी जा सकती है इस समय माथे पे, जहाँ तक सिटी क्लब कपवारा की टीम का सवाल है, उनके क्षेत्रफलों का सवाल है, उनकी टीम का सवाल है, क्योंकि विकेट के लिए जूझ रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यहाँ पे विकेट चटकाने होंगे और जल्द से जल्द एक तो विकेट का यहाँ पे काफी योगदान रहेगा इस पारी में। अगर यहाँ से जल्द विकेट चटकाते हैं तो निश्चित तौर पर संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है, नहीं तो धीरे धीरे से ये मुकाबला हाथ से फिसलता हुआ। 109 रन बन चुके हैं 13 ओवर में, 7 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 42 गेंदें आने बाकी और इस मुकाबले को जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता। तो निश्चित तौर पे अब धीरे धीरे से प्रयास कर रहे दोनों बल्लेबाज और उमर मसूदी संभवते एक और परिवर्तन गेंदबाजी में, जी हाँ, और वे गेंदबाजी करेंगे। क्या कुछ यहाँ पे वो प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्या कुछ यहाँ पे पैनापन उनकी गेंदबाजी में दिखाई देगा, क्या अंकुश लगा पाएंगे, क्या विकेट चटका पाएंगे, ये कुछ प्रश्न जरूर हैं और उनका उत्तर थोड़ी समय के बाद हमें अवश्य पता चलेगा। फिलहाल 109 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 13 ओवर की समाप्ति। उमर मसूदी जो कि परिवर्तन के तौर पर, एक और परिवर्तन यहाँ पर गेंदबाजी में, और इस प्रकार की बॉलिंग चेंज अवश्य है क्योंकि विकेट की आवश्यकता। और सामने है आसिफ मंजूर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे उमर मसूदी, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार। 13 ओवर की समाप्ति, 109 रन बने हैं, 3 मात्र विकेट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 विकेट हाथ में है इस समय डडो रेंजर्स के पास और निश्चित तौर पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास विकेट पर्याप्त समय में मौजूद है और 2 दिग्गज खिलाड़ी, 2 अनुभवी खिलाड़ी, आसिफ मंजूर और आदिल वानी की जोड़ी बीच मैदान में। अगली गेंद और इस बार ऑप्शन से बाहर, इस बार पंजों के बल्लों चलते हुए लाजवाब स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट वोकारा चौका, इस समय सहजता के साथ, संयम के साथ मन चहित स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं और इस चौके की सहायता के साथ 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 42 रन चाहिए, 41 गेंदें बची हैं और यहाँ पे अस्त व्यवस्थ कर दिया है गेंदबाजों को। जिस प्रकार से आसिफ मंजूर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उनका सहयोग कर रहे हैं आदिल वानी, 113 3 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर प्रगति पर और यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज के जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए और मुकाबला बहुत धीरे धीरे से पक्ष में झुकता हुआ डडो रेंजर्स के, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं और इस समय हाथ से फिसलता हुआ विकेट की आवश्यकता, रनों की गति पे अंकुश लगाने की आवश्यकता, क्या उसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं। और ऐसे में उमर मसूदी सामने वाले छोर से आसिफ मंजूर के लिए इस बार लेग साइड में, फिर धकेला, फिर खाली क्षेत्र में, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं और जब तक वे प्रयास करते, हालांकि गेंद तब तक सीमा रेखा से बाहर निकल चुकी है। 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका, 117 पे 3, लगातार इस समय रन गति को गतिशीलता देते हैं दोनों बल्लेबाज। 117 पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए करीब 38 रनों की आवश्यकता। यह पारी का 14वां ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदें हुई हैं, यानी कि 40 गेंदों से 38 रन बनाने हैं और पहली बार
जो रन तालिका है वो कम होती हुई गेंदों से, और ऐसे में उमर मसूदी इस ओवर में अगली बार आसिफ मंजूर के लिए। इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक, लाइयों का ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, अंपायर का निर्देश 4, और ऐसे में जस्ट मौका चौका मिलता हुआ 121 पे पहुंचा दिया। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, 3 चौके इस ओवर से आ चुके हैं। आदिल वानी और आसिफ मंजूर की जोड़ी समय प्रयास कर रही है, सफलतापूर्वक प्रयास, 155 बनाने हैं, 121 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर 13.3 के बाद। 39 गेंदें, और अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद मसूदी की, और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, मिडिल स्टंप पे आ रही थी, खेला जरूर कलाइयों के सहारे सीधे बल्ले से, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में इस बार फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के, और डॉट गेंद के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 3 गेंदों से 3 चौके, 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं 4 गेंदों से, 121 पे 3, 13.4 के बाद 2 गेंदों का आना बाकी पारी का 14वां ओवर, और 34 रन चाहिए अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर के उमर मसूदी, तिरछे रन अप के साथ उनकी ये गेंद, और इस बार फिर हालांकि समझ नहीं पाए और गेंद उनके ग्लव से टकराई, और उसके बाद विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद, 121, 3 विकेट के नुकसान पे 13.5, 14वां ओवर, और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी, 37 गेंदों का आना बाकी, और डाडू रेंजर्स कश्मीर को इस प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए सिटी क्लब का पारा के विरुद्ध 34 रन चाहिए। 37 गेंदों से उमर मसूदी कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाए। आखिरी गेंद देकर के तैयार आसिफ मंजूर के लिए, और इस बार आसिफ मंजूर ने गति और उछाल का प्रयोग किया, उसके बाद दिशा दे दी थी ऑफ साइड में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने फील्ड कर लिया, आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं आया। ओवर पूरा हुआ, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 121, 3 विकेट के नुकसान पर 36 गेंदें, 34 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और अगर यहां से विकेट चटका लेते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को अवश्य मिलेगा। यहां पे संघर्षता देखनी होगी, और लड़खड़ा इस मुकाबले को, भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट क्लब, अगर सिटी क्लब कफारा की टीम की बात करें तो लड़खड़ा इस मुकाबले में अपना जो है प्रतिदान वो निवेदन करना होगा। वे इस समय प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलतापूर्वक सफलता मिल नहीं रही है। कुछ शुरुआत में विकेट जरूर मिले, लेकिन उसके बाद 2 बल्लेबाज बीच मैदान में आदिल वानी और आसिफ मंजूर धीरे धीरे से अब इस मुकाबले को उनके हाथ से दूर ले जाते हुए और धीरे धीरे जीत की और इस समय अग्रसर दोनों बल्लेबाज। 121 पे 3, 14 के बाद 6 ओवर का खेल बचा है। आसिफ मंजूर 17 गेंदों से, और 17 पेड़ा बाद है 22 गेंदों से आदिल वानी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक, और निराश हताश चेहरे इस समय देखने लायक हैं। जहां तक सिटी क्लब कफारा की टीम का सवाल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही बनता है जिस प्रकार से वे अब स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, वापसी करनी होगी, वहां पे विकेट चटकाने होंगे, रनों की गति पे अंकुश लगाना होगा, अंतिम ओवर तक जाना होगा, और उसके बाद फिर परिणाम आपके हित में आया अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ये क्रिकेट की खूबसूरती है, आप आखिरी गेंद तक प्रयास तो करें, और तब जाकर के एक बेहतरीन निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। 121, 3 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर पूरे हो चुके हैं, 7 विकेट हाथ में हैं, और आदिल वानी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। पारी का 15वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। शेख जुनैद को वापस बुला लिया गया है दूसरे स्पेल में, और देखना होगा क्या कुछ यहां से प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्या विकेट वो प्राप्त कर पाएंगे। स्टंप से बाहर, हालांकि स्टंप्स को कवर करने के बाद बल्ला उड़ाना चाहते थे, भाग्यशाली रही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। शेख जुनैद की गेंदबाजी विश्लेषण, 3.1 ओवर, कोई मेडन नहीं, और 11 डॉट गेंदों के साथ 29 रन उन्होंने दिए हैं। हालांकि उन्हें सफलता मिली नहीं है, 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन दिए हैं। 14.1, 121, 3 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद, उसको सीधे बल्ले से खेला जरूर, वहां पे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया शेख जुनैद ने बगैर किसी रन के। 2 डॉट गेंदे शुरुआत में, 34 गेंदें, 34 रनों की आवश्यकता, और यहाँ पे मुकाबला संघर्षपूर्ण है, लेकिन विकेट काफी महत्वपूर्ण है। विकेट अगर आप चटकाते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबले में आपकी पकड़ हो सकती है, अन्यथा मुकाबला धीरे धीरे से आपके हाथ से फिसलता हुआ ये गेंद, और इस बार देवी का देखिए गेंद, ये कमाल का स्ट्रोक है, ये गजब का स्ट्रोक है, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जस्ट मौका छक्का, उनके रडार में गेंद एक कदम आगे निकाला, और क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर आदिल वानी के बल्ले से। 27-24 गेंदों से नाबाद है, 127 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। यह क्रिकेट का खूबसूरत मुकाबला, और अब एकतरफा मुकाबला बना दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। 33 गेंदों से अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 28 रन चाहिए। 127 पे 3, 14.3 के बाद लाजवाब आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन,
इस समय आदिल वानी और आसिफ मंजूर द्वारा। और डडू रेंजर्स के दर्शक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनकी टीम में समय उत्साहित होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे से वो एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 155 बना रहे हैं और 127 रन बना लिए। 28 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए, बची हुई 33 गेंदों से। आदिल वानी और आसिफ मंजूर बीच मैदान में प्रयास कर रहे हैं और अच्छी खासी संख्या दर्शकों की इस मैदान में। ये खूबसूरत मैदान कारिहामा स्पोर्ट्स स्टेडियम कुपवारा भरा हुआ खचाखच दर्शकों से इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए हर एक बेहतरीन सफलता पूर्वक प्रतियोगिता का आयोजन रामहाल क्रिकेट लीग 17-3-2023 और श्री बाट मूसा को जाता हुआ जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रतियोगिता को अंत तक ले जाया है। और इस बार फिर गेंद सीमा रेखा की ओर और अब सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए खिलवाड़ इस समय बल्लेबाजों द्वारा गेंदबाज के साथ। और 4 रन और 131 और अब मुकाबले को जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता मुकाबले को अपने नाम करने के लिए डडू रेंजर्स की टीम धीरे धीरे से प्रयास कर रही है। और ऐसे में 131 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी। धन्यवाद तनवीर और शफीक ख्वाजा अपना प्यार और विचार देने के लिए। अगली गेंद को फिर देखेला लेग पे उस ओर विकेट कीपर जा रहे हैं। 1 रन मिलेगा वहां पर। आसिफ मंजूर हालांकि इंटरेस्टेड नहीं है दूसरे रन में। 1 रन ओवर खाते में 132, 3 विकेट के नुकसान पे 14.5। आखिरी गेंद का आना बाकी। शेख जुनैद 40 रन खर्चे हैं। 3.5 अपने कोटे को वो समाप्त करने जा रहे हैं। आखिरी गेंद सफलता उन्हें मिली नहीं। आज काफी खर्चीले साबित हुए क्योंकि जिस शैली के वो गेंदबाज हैं वो प्रहार आज देखने को नहीं मिला। वो पैनापन गेंदबाज में दिखाई नहीं दिया और जिसका मुख्य कारण यह है कि आज सफलतापूर्वक इस रन गति को पार करने में एक मुख्य योगदान बल्लेबाजों का। इस बार फिर ऑप्शन से बाहर, लेकिन क्षेत्र रक्षण कमाल का, हालांकि सफाई के साथ कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं आया। ओवर पूरा हुआ तो इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति। 15 अतिरिक्त रन भी आए हैं। 15 ओवर के बाद डडू रेंजर्स 155 का पीछा करते हुए अब तक 132 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 5 ओवर यानी कि 30 निर्धारित गेंदें बची हैं और अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। $23 needed in 5 fours. It's all done and dusted for Steekleb almost. Dadoo Rangers, they have got 7 wickets in hand, 23 runs needed, 5 fours remaining. They are bossing the chase here at the center of Karihama ground. Chase has never been an option here at the ground, but Dadoo Rangers is not fast. Well, the team up high caliber we can do which no one else has done before, and they are now complementing, they are now fancying their chances here at the Karihama ground. And the body language of Steekleb Kuffara, it's almost they're down in their dumps. 132 for 3. And Adil Wani is on 38. On the other side, it's Asif Manzoor. He is on 22. 132 for 3. 7 wickets in hand. 5 fours remaining. 23 needed. It's Dadoo Rangers who are dominating Steekleb Kuppara. Raja Tanveer is back at his bowling markup. He will be bowling to Adil Wani. Improvisation at its best. 4 more. Shuffled across and played it in fancy style and sends it to the boundary for 4. And they are now in hurry. He's few runs away from his half century. He is on 42, 8 runs away from his half century, and they are 19 runs away from the win and to go in the quarterfinals of RCL. Once again, that's high, that's all Kaukana, that's going all the way. One bounce to the fence for 4. He goes to 46, 4 runs away from his half century. What an innings from this young man. An innings of a high class, an innings of a high caliber. Tremendous effort done by this batter. It's Adil Wani. He is on 46. This time goes on the back foot punch. This one straight to the fielder at point. No one there. It's a dart delivery. He's on 46 in 30 deliveries. It's Raja Tanveer. He's bowling his second over. 16 runs. Again this time punched away. There is a protection straight into his hands. It will be a single. And the single will take him to 47. 3 runs away. And they are 141
14 runs away from the win. It is Dadoo Rangers chasing the target of 155. They never looked in danger. Once again, quick single. They're calling back for the second and will complete with ease. And the couple will take score to 143. It's 143 for 3. 12 runs away from the win. Dadoo Rangers to make it into the quarterfinals of RCL 2023. And it is City Club, the home side. They are on the verge of to get knocked out of the tournament. High over extra cover to the boundary for 4. And it's Asif Manzoor who has joined the party. He goes to 28 in 20 deliveries. They are 9 runs away now. Eight runs away from the famous win here at the Karihama ground. Dadoo Rangers. 4 overs remaining. 8 runs needed. 2 runs per over. Is this the last over of the game to be bowled? And who is going? It's Faisal Bashir. First time in this match he is going to complete the formalities of the game here at the centre of Karihama ground. Because City Club know that they are almost out of the tournament. They are packing their bags. They are confirming their tickets. And they will be flying back to their home. And the team winning here, it's going to be Dadoo Rangers. They will face Rising Stars Badgam, Halal Coloured, Zubair Wani. The show they launched against Green Lions, that was something special. And once again, that's high, straight into the hands, and he dropped at all there. And a chance for Adil Wani to complete his half century. It's still on. It was straight into the hands of the fielder there, but he makes mess of it. Once again, outside edge, straight to the fielder. It's Sheikh Junaid. He doesn't top Mani, and that's end of Adil Wani. He goes, and he loses his chance to get half century. 3 runs away, and he goes back on 47. And it was Sheikh Junaid at Phillips who picked up this dolly, and that's wicket number 4 that goes down. Still 8 needed. And now the new batter out in the middle, it's Nasir Ganai, the talented Nasir Ganai. But they just need 8 runs. What has Nasir Ganai got? What will he do? What are his plans? Will he finish the match in style, or will he give style to Asif Manzoor? Outside off stump, punch straight to the fielder. No run there, a dot delivery. 16.3 overs, 147 for 4. 8 runs needed. Pacey delivery, pulled away with the disdain, all the way for the maximum. And that's Nasir Ganai. Don't bowl short to this man. He can hit you all day in and all day out. He has announced his arrival in style, but they are just 2 runs away from the victory. Nasir Ganai once again, slower, high in the air. There is a fielder, and it has gone to the fence for 4. That's it. And it is Dadoo Rangers who have made their place in the quarter final, and they will face Rising Star Badgam, and it's City Club Kupwara. The dream has been diminished for them. They are out of the tournament. That's it from the pre-quarter of City Club Kupwara and Dadoo Rangers. It's Dadoo Rangers who beat them by 6 wickets. धन्यवाद। तो इस प्रकार से न्यूज़ यही है कि मुकाबला जीत लिया है डडू रेंजर्स की टीम ने। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, जहां उनका मुकाबला राइजिंग स्टार बडगाम के साथ हो रहा है। ये जानकारी देते हुए मैं शेख नज़ीर, साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर और हमारे गेस्ट कमेंटेटर गयूर के साथ वापस आपको जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कल नए स्थान से नए दिन के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखेगा, हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।